Welcome back to the channel. In last class we have discussed about the compensation mechanism. Half of we have discussed, like 2 or 3 is left. We'll discuss today the left one, the compensation mechanism, and then in next class we'll start another shock. Okay, we will come with this compensation mechanism. We'll complete the hypervolumic shock, and then we will start with next shock in the next class. So let's start the leftover compensation mechanism. Okay, starting from this only, resorption of fluid from interstitial tissues, that is when adrenergic discharge is there is vasoconstriction, and this decrease the capillary intravascular hydrostatic pressure, which in turn result in influx of H2O, water, Na plus sodium and Cl minus from interstitial tissue space into capillaries. Okay. Now, resorption of fluid from intracellular and extracellular space. High extracellular glucose concentration. Then release of epinephrine, that is adrenergic discharge, from adrenal medulla, cortisol from cortex, glucagon from pancreas, and inhibition of release of insulin. This all will lead to high extracellular glucose concentration. Okay, what all? Release of epinephrine from adrenal medulla, cortisol from cortex, glucagon from pancreas, and inhibition of release of insulin will result in high extracellular glucose concentration. Now, products of anaerobic mechanism also accumulate in extracellular space. ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में, और प्रोडक्ट्स ऑफ एनाएरोबिक मैकेनिज्म विल आल्सो एक्यूमुलेट इन एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस, which will lead to hyperosmolality of extracellular tissue, which in turn draws water out of the cell. Then interstitial pressure increases, which will lead to water Na plus Kl minus forced into the vascular space across the capillary endothelium. एक्स्ट्रासेलुलर में हाइपर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी, मतलब ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी, दैट इज़ हाइपर ऑस्मोलैरिटी, जिसकी वजह से जितना भी वाटर है वो सब बाहर जाएगा आउट ऑफ द सेल, क्योंकि इधर हाइपर ऑस्मोलैरिटी है और अंदर हाइपो है, तो लो टू हाई हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, अंदर का प्रेशर इंक्रीज होगा, उसकी वजह से वाटर Na प्लस और Cl आर फोर्स इनटू द वास्कुलर स्पेस अक्रॉस द कैपिलरी एंडोथेलियम. ओके, नाउ लास्ट कंपनसेशन मैकेनिज्म इज renal conservation of body water and electrolyte. When ACTH release due to shock plus angiotensin 2, we have seen that it has been synthesized in the first compensation mechanism. Okay, these two hormones ACTH and angiotensin 2 will stimulate the synthesis and release of aldosterone from the adrenal cortex, which in turn result in resorption of H2O plus and Na plus, which in turn increase the or maintain the vascular volume. Okay, these two hormones will stimulate the synthesis and release of aldosterone, which will increase the resorption of H2O and Na plus, and which will maintain the vascular volume. Okay, so in turn, what are the compensation mechanism is mainly the release of adrenergic hormones, that is epinephrine, adrenaline और ग्लूकागॉन, एनी एड्रीनर्जिक हार्मोन का रिलीज होता है कंपनसेशन मैकेनिज्म, ताकि वेसो कंस्ट्रिक्शन हो सके और अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर Na प्लस और Cl माइनस, मतलब फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट हो सके, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ताकि जो वॉल्यूम लॉस हुआ है वो मेंटेन हो सके. इन शॉर्ट ये सारे कंपनसेशन मैकेनिज्म यही कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? वेसो कंस्ट्रिक्शन कर रहे हैं और रिजॉर्प्शन कर रहे हैं फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का, डिफरेंट वे से डिफरेंट हार्मोन रिलीज करके. ओके, that's all for today. This comes to an end. This brings us to an end of compensation mechanism. In next class we will deal with next shock. Okay, till then, like, share and subscribe. Bye, take care.